Welcome to the quick test. In this video, we will learn about Amazon EC2 or Elastic Compute Cloud. So Amazon EC2 is a web service provided by AWS that enables user to launch virtual servers in the cloud. These servers are called instances. It offers secure, resizable, cloud-based virtual servers. So इन दो पॉइंट्स को देख लेते हैं. So Amazon EC2 एक वेब सर्विस है जिसके थ्रू कोई भी यूजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सकता है इन द क्लाउड. These are basically the virtual servers or the virtual machines and इनको instances बोलते हैं. Okay, these are secure and resizable. Now designed for easy scalability, it provides developers with a simple interface to configure and obtain computing capacity efficiently. With control over resources like CPU, memory, storage, and networking, it becomes highly tailored to the needs of distinct users. That means जो EC2 instance types हैं या फिर EC2 instances हैं, इनके काफी सारे टाइप्स होते हैं और these are provided in highly configurable manner. Suppose ये यूजर है, इसको चाहिए 2 CPUs and it needs 16 GB of memory. It can opt for a virtual machine. Now अगर कोई और यूजर है, इसकी 2 CPUs की डिमांड नहीं है, he needs 4 CPUs and 32 GB of memory. Then EC2 instance ऐसा भी है जिसपे 32 GB मेमोरी होगी और 4 CPUs होंगे. He can also opt for this kind of instance from EC2 or Amazon Web Service. Now let's see some different points about launching an EC2 instance. So first one is the instance types that I just told you. EC2 offers various instance types optimized for different use cases such as compute intensive, memory optimized, or storage optimized, etc. So basically, EC2 provides a wide selection of instance types that are optimized to fit different use cases, जिसमें काफी अलग अलग रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक CPU, memory, storage, even the networking capacity. That gives me the flexibility to choose the appropriate mix of resources for my application. ठीक है, यानी कि इस यूजर के लिए भी जो एप्लीकेशन के लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज रहेंगे और ही कैन ऑप्ट फॉर, और इस यूजर के लिए भी अगर कोई डिफरेंट एप्लीकेशन है दैट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी यहाँ से ऑप्ट कर सकता है. ओके, फॉर डिफरेंट इंस्टेंस कंप्यूट टाइप्स यू कैन गो हियर. I will provide this link in the description. Okay, you can see there are various types of instance. The general purpose, compute optimized, memory optimized, accelerated optimized, or you can say storage optimized. HPC stands for high performance computing. So let's see for the T2. This is also an instance type T2. So you can see there are T2.nano, T2.micro, and many more. And the instances have different combinations of resources. This one has one CPU and 500 MB of, or you can say half of the GB memory, while this T2.micro has one CPU and 1 GB of memory. Okay, the network performance is low to moderate, but this one is low. So इनमें अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग या नीड्स के अकॉर्डिंग इंस्टेंस हम चूज कर सकते हैं. Let's get to the second point. This is AMI or Amazon Machine Image is a pre-configured virtual machine image used to create EC2 instances. It includes the operating system, application server, and applications. Amazon Machine Image basically कॉम्बिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सर्वर का और एप्लीकेशंस का. Amazon Machine Image जब भी हम कोई इंस्टेंस लॉन्च करेंगे या फिर सर्वर लॉन्च करेंगे तो हमें एक Amazon Machine Image बतानी होगी दैट डिफाइंस द ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मुझे यहाँ पे लिनक्स बेस्ड मशीन चाहिए, विंडोज बेस्ड चाहिए, इवन इट गिव्स द सपोर्ट फॉर मैक ओएस, तो आई कैन
choose different types of AMI. Now in security groups, the security groups act as a firewall or virtual firewall for the EC2 instance. They control inbound and outbound traffic to the instance. Okay, so basically जो हमारा सर्वर है और जो बाहर का ट्रैफिक है या फिर पब्लिक प्लेस है या यू कैन से द पब्लिक इंटरनेट, उनके बीच की जो फायरवॉल रहेगी उसको ही सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है. ओके, दीज आर बेसिकली फॉर द इंस्टेंस इनकमिंग ट्रैफिक एंड द आउटगोइंग ट्रैफिक. ठीक है, so you can say this is the firewall. I'm sorry for the diagram. Now for key pairs, EC2 instances are accessed using key pairs. These are created during the launch and public is kept by AWS while private key is downloaded. Okay, so EC2 instances का पार्ट है की पेयर जिनको यूज करके हम EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ दीज आर क्रिएटेड, जब भी हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तब ये की पेयर क्रिएट होता है. एंड पब्लिक की पेयर या फिर पब्लिक की EC2 इंस्टेंस या फिर AWS मेंटेन करता है, वाइल जो प्राइवेट की है वो डाउनलोड कर सकते हैं हम. एंड दीज आर डाउनलोडेबल ओनली वन टाइम, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ वी लॉस द प्राइवेट की then we cannot download that key again. Okay, so next is EBS. EBS provides block level storage volumes that can be attached to EC2 instances. It is used for persistent and durable data storage. So EBS basically block level storage provide करता है EC2 instance को, और ये raw और unformatted block devices की तरह behave करते हैं. Now these EBS can be mounted as a volumes or data storage on the EC2 instance. ठीक है, now इनका एडवांटेज क्या है? These are persistent independently from the life of instances. That means suppose मेरे पास ये सर्वर है here, इससे जो EBS वॉल्यूम है और स्टोरेज अटैच टू द सर्वर. सो अगर in case I stop this instance or server, then this EBS will be maintained or remain persistent. अगर मैं कोई नया सर्वर लॉन्च करता हूँ, then I can just attach this one EBS to the newly launched server and I can get the same data here. ठीक है, now user data scripts, these are bootstrap script in EC2 instances that are used to perform common automated configuration tasks, and these scripts run during the initial launch. तो बेसिकली बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट वो होती हैं जो कि बूट के टाइम पे रन की जा सके. यूजर डेटा में हम कुछ कमांड डाल सकते हैं दैट विल बी रन ड्यूरिंग द बूट ऑफ आवर इंस्टेंस. सो ये स्क्रिप्ट रन होंगी जब भी हमारा इंस्टेंस लॉन्च होगा फॉर द इनिशियल टाइम. ओके, एंड ये एज अ रूट रन होती हैं, और अगर मैं सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट कर रहा हूँ तब ये दोबारा से रन नहीं होंगी. Now for launching an EC2 instance, these were the basic points that need to be kept in mind. Now if you want to learn how to launch an EC2 instance and also connect to it, then you can refer the video in the I button. Thanks.